अल्हम्दुलिल्लाहि हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबि ताजी वल मिअराज वल बुराकी वल अलम मंबाइल हिल्मी वल हिकमी व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और हबीबी सैयदी या रसूल अल्लाह, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। आका दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। Indeed, it is a blessing of Allah Rabbul Izzat. Choices, durood and salam upon mine and your Aqa, Rahmat-e-Alam, Muhammad Mustafa, Sallallahu Alaihi Wasallam. Today, on behalf of your host, it is an honor and a privilege to be present here for the maqsad and only that maqsad, to send durood and salam upon Allah's most beloved रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुहतशम आक़ाए दो जहां मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. For the time that I have been given and so many requests as well, but मैं इंशाअल्लाह गुजारिश और मैं कोशिश करता हूँ कि अल्लाह मुझे ऐसे कलाम पेश करे जो आप लोग को पसंद करे, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि that कलाम must touch you and revive you. And only for that maqsad, because by hearing the name Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it must bring contentment and coolness to the heart. Like the hadith of my Aqa Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilay min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, aw kama qala alayhi salatu wassalam. That none from amongst you can be a true mu'min, a believer, until and unless you love Allah's most beloved, and that is Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, more than yourself, your children, and entire mankind. And those that are seated here today present, they say the biggest miser, just that so that the crowd can get settled and seated, but they say the biggest miser is that person, upon hearing the name and most blessed and beloved name of Allah's beloved Muhammad Mustafa, and does not send durood and salam upon that name, then you are regarded as the biggest miser. So alhamdulillah, today you that are seated here are not misers. You all are the ummah of Rasulullah, because you all have come here because you all love Muhammad Mustafa. अगरचे मेरे साथ मिल के मोहब्बत से दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं, तो इसमें और मज़ा, इसमें और लुत्फ़ है, इसमें और मिठास है। तो मेरे साथ मिल के ज़रा बवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या जज़ाकल्लाह। हाँ, मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या तड़प रहा हूँ तेरे शहर की हवा के लिए, मन गुलाम तो या रसूल
और लाज रखना कि मैं तुम्हारा हूँ आका, गो बुरा हूँ तो या रसूल अल्लाह फिर कहना सल्लल्लाहु अलैहि या And I'm sure one more time collectively if we read we will get more barakah and sawab. Sallallahu alayhi Habib Allah पढ़िए sallallahu या हबीब अल्लाह आका 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 तेरे आने से रंग बदला ज़माने का कहना आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का या रसूल अल्लाह यार if you appreciate it and love it the way I love it then मेरे साथ पढ़िए या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह आगे मिसरा सुनिए आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का है बत से गिरा तेरी हर बुत बुत खाने का या रसूल पुकारो या रसूल अल्लाह या पुकारो या रसूल अल्लाह या शाबाश पुकारो या रसूल अल्लाह या पुकारो या रसूल अल्लाह महबूब न गम करना सरे महशर तू उम्मत का महबूब न गम करना
सर महशर तुम्मत का, महशर तो बहाना है, महशर तो बहाना है, आका तेरी शान दिखाने का, या रसूल अल्लाह। शाबाश या रसूल अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह। किबला जी, तू चूम ले तलियों को, काफूरी होठों से, तू चूम ले तलियों को, काफूरी होठों से। खुद रब ने सिखाया है, खुद रब ने सिखाया है, आदाब जगाने का, या रसूल अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह, क्योंकि सारी दौलत खुदा की मदीने में है, ताजदार ज़माना मदीने में है, जिनकी खातिर बनाए गए दो जहां, वो रसूल यगाना मदीने में है। मैंने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं, यूं तो जन्नत में सब कुछ मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में, और जन्नत मदीने में मौजूद है। आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का, या रसूल अल्लाह। मैंने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं, यूं तो जन्नत में सब कुछ मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। अल्लाह का घर खुल्द का नक्शा नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, जो मदीना नहीं देखा। रिज़वा तेरी जन्नत में मेरा जी नहीं लगता, मैंने तो यहाँ गुम्बद खजरा नहीं देखा। ऐ मौत मेरी मौत जरा और ठहर जा, मैंने अभी सरकार का रोजा नहीं देखा। का तेरे आने से रंग बदला जमाने का। तवज्जो चाहता हूँ शेर पे। मुश्ताक है रब प्यारे, तेरी नूरी मुखरे का। मेराज बहाना था तुझे पास बुलाने का, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। पुकारो या
मोहब्बत से कहना, ऊंची कहना, या रसूल अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। कहना मेरा साथ मिलके, नूर वाला आया है, नूर लेकर। सारी आलम में ये देखो किसका नूर छाया है। अस्सलात अस्सलातु वस्सलामु अलैका या। कहना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला सारे आलम में ये देखो किसका नूर छाया है। अस्सला और मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद। मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद। मेरा लाशा भी कहेगा नूर वाला आया है, नूर लेकर। सारे आलम में ये देखो किसा नूर छाया। अस्सलातु अस्सलातु वस्सलाम। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा, मेरे आका का रोज़ा मदीने। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और ईमान मदीने में है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। फिर मुझे मौत क्या कोई खतरा न हो, अरे मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो। काश सरकार एक बार मुझसे कहे, अब तेरा जीना मरना है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले,
अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। निगाह वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। शैयनिल्ला या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद। शाबाश साकिन अल बगदाद या शेखुल गौसे आज़म बने बेसर सामा मददे क़िबला ये दी मददे काबा काबा वो ईमान मददे। शैयनिल्ला या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद। ये दिल ये जिगर है, ये आँखें ये नम है। ये दिल ये जिगर है, ये आँखें ये नम है। ये दिल ये जिगर है, ये आँखें ये नम है। जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। शैयनिल्ला या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद। आप भी पढ़िए मेरे साथ। शैयनिल्ला या अब्दुल कादिर साकिन अल शेख अल जीलानी ख्वाजा हिंद। ये दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। या गरीब नवाज या गरीब नवाज, तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है। मैं गरीब बड़ा, मैं गरीब बड़ा, तुम बड़े गरीब नवाज। हाँ मैं गरीब बड़ा, तुम बड़े गरीब नवाज। मोइनुद्दीन 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 मेरे ख्वाजा। ज़माना छूटे हम न छोड़ेंगे, दरे गरीब नवाज। तस्वीर मोहम्मद है मुखरा मेरे ख्वाजा का, किबला है फकीरों का। रोजा मेरे हाँ मोइनुद्दीन 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 मोइनुद्दीन। शादी मेरे ख्वाजा की, शादी मेरे ख्वाजा की किस शान से होती है। आया है मदीने से सहरा मेरे ख्वाजा का। आया है मदीने से सहरा मेरे ख्वाजा का। मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन
मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन। और जिसको न यकीन आए, जिसको न यकीन आए, वो अजमेर चला जाए। बटता है वहाँ घर घर सदका मेरे ख्वाजा का। मोइनुद्दीन 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 मोइनुद्दीन। देखो तो सखावत में, देखो तो सखावत में क्या शान है ख्वाजा की। खाते हैं शहंशाह भी लंगर मेरे ख्वाजा का। खाते हैं शहंशाह भी लंगर मेरे ख्वाजा का। किसका मोइनुद्दीन 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 मोइनुद्दीन। कोई किसी का, कोई किसी का, somebody कोई किसी का, कोई किसी का, मगर हमने तो मदीने से पाया है मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन ख्वाजा। मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन। आखिरी, क्योंकि जब आया था तो किबला जी सरकार साबिर पाक कलियरी की कलाम पेश कर रहे थे, तो मैं भी चाहता हूँ दो अशार उनकी कलाम फिर आपसे हाजिरी लेता हूँ, आपसे इजाज़त लेता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहब्बत से पढ़ना सल्लल्लाहु अलैहि सदका मिले। Say Subhanallah. Before I finish the next stanza, say all together loudly, yaar. Say Subhanallah. इस तरफ से Subhanallah loudly कहो। सदका मिले फरीद का, साबिर की हाथ हो। या रब मेरे नसीब हो ऐसी खैरात हो। सदका मिले फरीद का, साबिर की हाथ हो। कहना सदका मिले फरीद का, साबिर की हाथ हो। या रब मेरे नसीब हो ऐसी खैरात हो। हर पल मेरी हयात का गुजरे बस उस जगह। हर पल मेरी हयात का गुजरे बस उस जगह। किस जगह इम्तियाज भाई, किस जगह पे? जिस जगह पे कि जिक्रे फरीद हो,
ज़िक्र फरीद हो यहाँ साबिर की बात हो, या रब मेरे नसीब हो ऐसी, हाँ हर पल मेरी हयात का गुजरे बस उस जगह ज़िक्रे फरीद हो यहाँ साबिर की बात हो, या रब मेरे नसीब हो ऐसी खैरात हो। और अल्लाह की रहमतों का वहाँ होता है नुज़ूल, अल्लाह की रहमतों का वहाँ होता है नुज़ूल, जिस जा फरीदुद्दीन हो साबिर की ज़ात हो, या रब मेरे नसीब हो ऐसी खैरात हो। जज़ाकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। MashaAllah, our respected Qari Sahib beautifully recited the praises of the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam and manaqib in the shan of the awliya ikram. May Allah subhanahu wa ta'ala preserve our respected Qari Sahib, grant him a long healthy life and keep him salamat. It is our iman and aqidah that those people that praise the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, those people that make the dhikr of the most beloved creation of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala always keeps them salamat. May Allah subhanahu wa ta'ala keep everyone that is part and parcel of this gathering of Eid Miladun Nabi sallallahu ta'ala wa sallam salamat. Inshallah, without any tamheed, without any introduction, alhamdulillah, our respected Alim-e-Deen Maulana Tahir Jahangir Sahab and our respected Qari Sahab, mashallah, they mentioned a very beautiful, a very famous shair where the shair says, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वहीं जिनको सरकार बुलाते हैं. Your presence here is a proof that you have been invited by none other than that personality whose milad we are celebrating. Your and my master, our master, the soul of creation, the cream of creation, the distributor of the divine treasures of Allah subhanahu wa ta'ala, the intercessor of the ummah, Janab Ahmad Mushtaba, Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Inshallah, I will commence my brief, my mukhtasar guftugu with a few ash'ar of Nati Rasul sallallahu ta'ala sallam. Hamari respected Daud Bhai also asked me to recite a few ash'ar in the shan of Atai Rasul. Atai Rasul, the meaning of Atai Rasul is the gift of the Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam. Khaja Gharib Nawaz radiyallahu ta'ala anhu is the gift of the Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam to the people of the subcontinent. So inshallah, a few ashar in the shan of Khaja Gharib Nawaz radiyallahu ta'ala as well. Inshallah, it is my humble request, especially to our brothers, to join me in sending salawat and salutations upon the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. You know, the shair beautifully says, Nisar teri chahal pahal par hazaro Eid Rabiul Awwal siwai Iblis ke jahan mein sabhi to khushiyan mana rahe hain. When the Holy Prophet sallallahu ta'ala sallam was born, every single creation of Allah subhanahu wa ta'ala celebrated the Mubarak arrival of the Holy Prophet sallallahu ta'ala sallam. Every single creation of Allah subhanahu wa ta'ala celebrated Miladun Nabi sallallahu ta'ala wa sallam. There was only one creation, only one.
The Shair says, Mufti Ahmad Yar Khan Naimi Rahmatullah alayh, great alim deen, great scholar of the subcontinent. He says there was only one creation of Allah subhanahu wa ta'ala that was sad. And even in the present day and age, there are some people that when we celebrate Miladun Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, they get sad. So wo guru tha, ye chele hain. वो उस्ताद था ये शागिर्द है वो पीर था और ये मुरीद है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह says निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे only one creation of Allah subhanahu wa ta'ala was sad and that was Iblis, that was Shaitan. Allahu Akbar. Apart from Iblis and Shaitan, every single creation of Allah subhanahu wa ta'ala celebrated Miladun Nabi sallallahu ta'ala wa sallam, the Mubarak arrival of the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. You know why? कि शबे विलादत में सब मुसलमान न क्यों करें जानो माल कुर्बान अबू लहब जैसे सख्त काफिर खुशी में जब फैज़ पा रहे हैं. Abu Lahab, the uncle of the Holy Prophet sallallahu ta'ala sallam, we all know Abu Lahab, what an evil, what a wicked person he was throughout his life. He was against the Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam. He was against the mission of the Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam. But do you know when the Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam was born, Abu Lahab's female slave, Hazrat Thuwayba radiallahu ta'ala anha, came with this khushkhabri, with this glad tidings, with this good news that, O Abu Lahab, your sister-in-law, Hazrat Amina radiallahu ta'ala anha, has given birth to a baby boy. Allah, Allah, Allah. So when he heard this, out of joy and out of happiness, you know what he said? He made ishara and he indicated towards who? Hazrat Suwayba radiallahu ta'ala anha with his index finger, and he said, Oh Suwayba, because you have brought this khush khabri and this good news to me, from today you are free. From today you are, he made ishara and said, Tu azad hai aaj se. From today you are free. Allahu Akbar. When Abu Lahab, we all know he died in the state of kufr. Allahu Akbar. When he died, then one of the family members saw Abu Lahab in his dream and asked, Oh Abu Lahab, how did Allah subhanahu wa ta'ala treat you? So bola, bahut pareshan hu. Allahu Akbar. I'm being punished by the angels of Allah subhanahu wa ta'ala. I was against the beloved Mustafa sallallahu ta'ala sallam throughout my life. I was against his mission. Allahu Akbar. Halat bahut kharab hai. But, then he said, but every Monday, the Holy Prophet sallallahu ta'ala sallam was born on a Monday. Every Monday, I get an opportunity to suck my index finger. Yeah, I suck my index finger, and every Monday when I do this, there is some relief in my azab and in my punishment. Why? Because when the Holy Prophet sallallahu ta'ala sallam was born, I made ishara at Suwayba and I said, Oh Suwayba, because you have brought this khush khabri and this good news, from today you are free. Allahu Akbar. Now imagine, Shaykh Abdul Haq Muhaddis Dahlvi radiallahu ta'ala says that if a kafir like Abu Lahab, you know, we have Amirul Mu'mineen, Hazrat Siddiq Akbar radiallahu ta'ala anhu, Amirul Mu'mineen, Hazrat Farooq Azam radiallahu ta'ala anhu, Amirul Mu'mineen, Hazrat Usman Ghani radiallahu ta'ala anhu, Amirul Mu'mineen, Maulai Kainat, Sher Khuda Aliyul Murtaza, Karramallahu ta'ala wajhul. They are the leaders of the believers. It wouldn't be wrong to say that Abu Lahab was Imamul Kafirin. He was the leader of the Kafirs. Imagine if not any Kafir, but the leader of the Kuffar and the Mushrikeen, imagine if he is also benefiting from expressing his love, his joy, his happiness at the arrival of the Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam. Imagine the ummatis of the Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam, how much of fuyuz or barakat, blessings they will receive from the divine court of Allah subhanahu wa ta'ala if they express their happiness and their joy at Miladun Nabi sallallahu ta'ala wasallam. Allahu Akbar. Siwai Iblis ke jahan mein sabhi to khushiyan mana rahe hain. Inshallah, ye to tamheed thi. I will recite a few ashar of Nati Rasul sallallahu ta'ala wasallam. Inshallah, and I will base my mukhtasar bayan, my mukhtasar guftugu. I know at 8:15 is adhan for Salatul Isha, and thereafter, inshallah, Niyaz Langar will be served, inshallah. But the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has mentioned, Ma qalla wa kafa khairum mimman kathura wa alha. Sometimes, you know, people have this habit of giving long bayanat. You know, so the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has beautifully mentioned, and he advised his Sahaba Ikram, that which is
little but sufficient. That which is little but sufficient. You know, if one hadith mubarakah, one sunnah of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is mentioned in a gathering, and our brothers and sisters, they are able to make amal upon it, subhanallah, beda par hai. So whatever is little and beneficial is better than that which is a lot and people get bored. So the Holy Prophet ﷺ has also advised us how we should, educate our Muslim brothers and sisters, inshallah. In this mukhtasar and brief time, inshallah, I will try to recite a few kalams and inshallah also mention a few things with regards to the uniqueness of the Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam. From head to toe, the Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam is the most unique creation of Allah subhanahu wa ta'ala. And Sayyidi Ala Hazrat Allahu Akbar, he has given his final verdict on this matter. On the greatest of the Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam, and he says, Lekin raza ne khatme sukhan is pe kar diya. Lekin raza ne khatme sukhan is pe kar diya. Khalik ka banda khalq ka aqa kahun tujhe. Ya Rasulullah, what should I call you? Ya Rasulullah, what should I call you? Allahu Akbar. He says, my final verdict on this matter, on the greatness and the fadilat and the excellence of the Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam is that you are the banda, you are the servant of Khaliq, Allah subhanahu wa ta'ala, but at the same time, you are the king and you are the master of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Khaliq ka banda khalq ka aqa kahun tujhe. Alhamdulillah, may Allah subhanahu wa ta'ala accept this Mubarak gathering. There's so much of nur, there's so much of light. After all, it is the gathering that is dedicated and it has special nisbat with the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq and hidayah to always celebrate Miladun Nabi sallallahu ta'ala sallam and make amal upon the beautiful seerah, the beautiful sunnah of the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Let us collectively send salawat and durood in the bargah of the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habib Allah. खाक सूरज से अंधेरों का इजाला होगा, खाक सूरज से अंधेरों का इजाला होगा। आका आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। आका आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। अल्लाह 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 किए जाने से तो अल्लाह न मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों, फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों, सभी दे मनाओ हुजूर आ गए हैं, 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 हुजूर आ गए हैं। उठो बेकरारो चलो बेसहारो, उठो बेकरारो
चलो बेसहारो खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हैं 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 अनोखा निराला वो ज़ीशान आया वो सारे रसूलों का सुल्तान आया अनोखा निराला वो ज़ीशान आया वो सारे रसूलों का सुल्तान आया सुल्तान आया अरे बादशाह हो अरे कज कुला हो अरे बादशाह हो अरे कज कुला हो निगाहें झुकाओ हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं. The Shair says Anokha Nirala. Anokha means unique. As I mentioned, that the Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam from head to toe is the most unique creation of Allah subhanahu wa ta'ala. That is why whether we praise the Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam or not, whether we recite Naate Rasul sallallahu ta'ala wasallam or not, the Holy Quran itself, the book of Allah subhanahu wa ta'ala itself, from the bow of Bismillah till the scene of Nas, every single word is Naate Rasul sallallahu ta'ala wasallam. The entire book of Allah subhanahu wa ta'ala, the Holy Quran itself is Naate Rasul sallallahu ta'ala wasallam. And that is why those people that had knowledge, those people that had knowledge and ilm of the previous scriptures, the previous divine books of Allah subhanahu wa ta'ala, when the Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam migrated to Madinatul Munawwara, Allahu Akbar, what was the name of Medina before the migration? Yathrib. Yathrib, Allahu Akbar. Yathrib literally means a house of sicknesses. When people used to go to Yathrib, they used to get sick. Bimar ho jate the. Today when people are sick, they are taken to Madinatul Munawwara. This is through the sadaqah of the Qadam Mubarak of the Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam, that the Khak of Madinatul Munawwara is also known as Khak-e-Shifa. Even the Khak of Madinatul Munawwara grants the sick what? Shifa. Allahu Akbar. Yes, Shifa comes from Allah subhanahu wa ta'ala. But Allah subhanahu wa ta'ala loves His beloved Mustafa sallallahu ta'ala so much that He has put Shifa in that Khak which has kissed the Mubarak feet of the Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam. So when the Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam migrated to Madinatul Munawwara, Hazrat Abdullah ibn Salam, he was a Jewish scholar. He had the knowledge of Tawrat and Injil, the books that were revealed upon Hazrat Musa alayhi salam and Hazrat Isa alayhi salam. He came in the bargah of the Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam. He accepted Islam. He came with some of his friends that were also Jewish scholars. They all accepted Islam. When the Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam asked, "O Abdullah bin Salam, O Abdullah, how did you recognize that I am the final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala?" Allahu Akbar. He says, "Ya Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam, from whatever we know that has been mentioned in the books of Allah subhanahu wa ta'ala, Tawrat and Injil, the description that has been mentioned in Tawrat and Injil with regards to you, with regards to the final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, after having knowledge of that, my recognition for you, Ya Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam, is better than my recognition for my very own sons.
It is possible that Abdullah would not recognize his own sons, but it is impossible that Abdullah would not recognize the final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. That is why, the Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam performed various mu'jizat, various miracles. The Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam made ishara and he split the moon into two. The Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam made ishara and he brought the sun back so that Hazrat Ali could offer his Salatul Asr. The Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam gave hukm and the stones recited kalima. These are the mu'jizat and the miracles of the Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam. But Hazrat Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala beautifully says, he says, you don't have to observe, you don't have to witness the mu'jizat of the Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam. Law lam takun fihi ayatum mubayyana. He says, law lam takun fihi ayatum mubayyana. Even if the Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam wouldn't have performed those mu'jizat and miracles that he performed, kanat badihatuhu tumbika bil khabari. By merely looking at the beautiful face of the Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam, you would know that he is the final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. That he is the final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Hazrat Salman Farsi radiyallahu ta'ala came in the bargah of the Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam. He came all the way from Persia. That is why he is Farsi. Farsi means that person who comes from Faras. So he spent a few months in the company of a Jewish scholar. When this Jewish scholar was about to leave this world, he made a wasiyat. He did khidmat. Hazrat Salman Farsi made khidmat of this Jewish scholar. So this Jewish scholar said that, oh Salman, you served me, you took good care of me, and it is my responsibility and it is my duty that I should give you some wasiyat that would be a means of najat for you, a means of success for you in this world as well as in the year after. So Hazrat Salman Farsi said, okay, give me your wasiyat, advise me. He said that after I leave this world, I want you to go to a place called Yathrib. Obviously, this was before the Holy Prophet migrated to Madinatul Munawwara. Go to Yathrib. The final messenger of Allah will migrate to Yathrib. He will come there, he will stay there, and he will make aram there till the day of Qiyamah. Allahu Akbar. So Hazrat Salman Farsi radiallahu ta'ala asked that, can you please, you are advising me to go to Yathrib so that I can, be blessed with the mulaqat, of the final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Can you please mention a few signs of this final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala? So this Jewish scholar mentioned 3 signs. And he said, oh Salman, the first sign, the first nishani of the final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala is that he will not accept charity. He won't accept sadaqah. He won't accept charity. Do you know why? Do you know why? Because in the time of the Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam, a slave could not give sadaqah and charity to his master. A slave could not give sadaqah and charity to his master. Now the question is, who is the master and who are the slaves? Undoubtedly, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the master, and the entire creation of Allah subhanahu wa ta'ala is the slave of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, first sign, first nishani, that he won't accept sadaqah and charity. The second nishani, the second sign, he will accept a hadiyah, tohfa. If someone gives you a tohfa, if someone gives you a gift, it is sunnah of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam to accept it. 2 signs. The third sign, that muhre nubuwat, the seal of prophethood, would be between his 2 shoulders. Allahu Akbar. Now I want to speak on the ilm ghaib of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Na'udhu billah, in the present day and age, people say that astaghfirullah, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam did not even know what was behind this wall. Allahu Akbar. This advice, this nasihat, this wasiyat was being given to Hazrat Salman Farsi before he could even come to Yathrib, before he could even come to Madinatul Munawwara. Now the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam migrates to Madinatul Munawwara. Hazrat Salman Farsi gets some khujur, some dates, and he comes in the bargah of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he says, Ya Rasulullah, this is for you. So the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam asked, Oh Salman, is this sadaqah or hadiyah? Is this charity or gift? He said, Ya Rasulullah, this is sadaqah, this is charity. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, we don't accept charity. We don't take sadaqah. So he returns with it.
Okay, then he comes again with some more dates. He says, Ya Rasulullah, that was charity. You don't accept charity. This is tohfa, this is hadiyah, this is a gift for you, Ya Rasulullah. So the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam accepts this gift. Allahu. Now Hazrat Salman Farsi is waiting for that opportunity. Allah, he's waiting for that mawqa, that opportunity when he would make ziyarat of the seal of prophethood, which was between the shoulders of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. As he was still thinking about it. Abhi soch hi rahe the. People say that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah, does not have the knowledge of the unseen. He does not know what is behind this wall. Allahu Akbar. He knew what was in the mind of Salman Farsi. What Salman Farsi was thinking, even that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam knew. So he says, oh Salman, here. He removes his chadar Mubarak and he says that look at what you were told by that Jewish scholar to look at. For verily this is the third sign that the Jewish scholar told you, that the Muhre Nubuwat, the seal of prophethood, would be between my two shoulders. Allahu Akbar. This is the ilm ghaib. This is, you know, the uniqueness of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. When people looked at the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, they accepted Islam. Allahu Akbar. You know, Hazrat Siddiq Akbar radiallahu ta'ala who came in the bargah of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. He said, Ya Rasulullah, you are the most handsome, you are the most beautiful creation of Allah subhanahu wa ta'ala. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, O Siddiq Akbar, O Abu Bakr, Sadaqta, you have spoken the truth. Abu Jahl came after a while, he said, Na'udhu billah, O Muhammad, you are the most ugly creation. Allahu Akbar. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Ya Abu Jahl, Sadaqta, you have spoken the truth. When Siddiq Akbar asked, Ya Rasulullah, when I said you the most beautiful creation of Allah subhanahu wa ta'ala, you said, ye bhi sach hai. Abu Jahl, or nalaik, that wicked man came, he said, you are the most ugly creation. You said, Sadaqta, how can two opposite things be correct? The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, O Abu Bakr, my personality is the divine mirror of Allah subhanahu wa ta'ala. When you came to see me, you saw your reflection in this mirror. That is why you said, Ya Rasulullah, you are the most beautiful creation. You know why? Oh Abu Bakr, because you are so beautiful. And when Abu Jahl came, he saw his reflection in this divine mirror of Allah subhanahu wa ta'ala. Because he is the most ugly, that is why he said, Oh Muhammad, you are the most ugly creation. Allahu Akbar. That is why the Shair says, Rukhe Mustafa hai wo aina. रुखे मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना ना हमारी बज़्म ख्याल में ना दुकाने आईना साज में. Allahu Akbar. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the divine manifestation of Allah subhanahu wa ta'ala. He is the noor of Allah subhanahu wa ta'ala. That is why Sayyidi Ala Hazrat beautifully says, Subh Taiba mein hui, batta hai bada noor ka, sadqa lene noor ka, aaya hai tara noor ka. Do you know that stars are created from noor? Stars are created from Noor. Allahu Akbar. Human beings are created from sand. Jinns are created from fire. The Malaika angels are created from Noor. The stars are also created from Noor. But when the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was born, there was a star shining in Madinatul Munawwara. The Jewish scholars, they had knowledge. They knew the description of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. They knew the signs of the final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. When the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was born, a star was shining in Madinatul Munawwara. These Jewish scholars, when they saw this star, they said that this is the sign that the final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala has arrived. And Sayyid Ala Hazrat beautifully says, he says, it was as if this Nurani star, this creation of Noor, came to take charity and sadaqah from the bargah of the beloved Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Because it is our iman and aqidah that chamak tujhse paate hain sab paane wale. Chamak tujhse paate hain sab paane wale. Mera dil bhi chamka de, chamkane wale. Whatever is shining, wherever there is noor, wherever there is light, it is through the sadaqah of the noor of the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. To shair kehta hai, falake nazaro, zami ki baharo, sabhi de manao, huzur aa gaye hain. हुआ चार सूर है मतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा. हुआ चार सूर है मतों का बसेरा, उजाला उजाला
सवेरा 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 हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं। ऑल टुगेदर हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। The shair speaks about Hazrat Halima Saadiya radiyallahu ta'ala anha. You know, Hazrat Halima Saadiya radiyallahu ta'ala anha is the best foster mother. She is the greatest foster mother. You know why? Because she is the foster mother of the Holy Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. When she brought the Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam with her, Allahu Akbar, after a few days, some of her friends started to tease her. They were joking with her. They said, "Oh Halima, looks like you got hold of a child, of a baby from a very wealthy, from a very rich background." So she asked, "Why do you say this?" So they said that we see that even at night, you don't put off your lamps. There is nur, there is light in your house, O Halima. And in order to light a lamp, you need oil. And oil even at that time was very expensive. Allahu Akbar. You need oil to light a lamp. And even at that time, oil was very expensive. So they thought that she got hold of a child from a very wealthy, from a very rich background. Therefore, they gave her some sadaqah, some charity, a lot of money, so that, she went and bought so much of oil, where even at night, throughout the night, there is light in your house, O Halima. Allah. But tonight, when we go to bed tonight, what will we do? We'll switch off the lights, because electricity is also very expensive. Allahu Akbar. That is what we're going to do. When we go to bed, we switch off the light. So they were asking her that, how come there is nur and there is light in your house throughout the night, O Halima? She said, "Oh, I understand which light you are talking about now. I will not tell you about this nur. I will not tell you about this light. Come with me, I will show you that nur. I will show you that light." And she brings her friends home. Allahu Akbar. The Holy Prophet sallallahu ta'ala sallam was making aram in the house of Hazrat Halima Saadiya radiyallahu ta'ala anha. She points at the Holy Prophet sallallahu ta'ala sallam. She makes ishara at the Holy Prophet sallallahu ta'ala sallam, and she says, "Ma kunna nahtaju ila siraji min yawmin akhadnahu." The day Halima, the day I brought this Mubarak Nurani child to my home, I took all the lamps and I threw them away. Throughout the day, he keeps my house Nurani. Throughout the night, he keeps my house Nurani. Allahu Akbar. This is the nur of Allah subhanahu wa ta'ala. That is why Sayyidi Ala says, "Teri nasle paak mein hai bachcha bachcha nur ka." That is why with Miladun Nabi sallallahu ta'ala sallam, we celebrate the urs of the awliya kiram. We celebrate the urs of Piron ke Pir. Roshan Zamir Sheikh Abdul Qadir Jilani Ghaus-e Azam radiyallahu ta'ala. Why? Because he's from the gharana of the Holy Prophet sallallahu ta'ala sallam. The Holy Prophet sallallahu ta'ala sallam is Nurullah. And likewise, Sarkar Ghaus-e Azam is also the nur of Allah subhanahu wa ta'ala. We celebrate the urs Mubarak of Atai Rasul Khaja Khajgan, Khaja Moinuddin Chishti Ajmeri Sanjari radiyallahu ta'ala. You know why? Because he's from the gharana of the Holy Prophet sallallahu ta'ala sallam. We celebrate the aras, the urs Mubarak of the awliya ikram. Why? कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर. Ya Rasulullah, you are ऐने नूर. You are the source, you are the fountain of nur. तेरा सब घराना नूर का. Allahu Akbar. We are very fortunate. We are very fortunate that we are the ummatis of the Holy Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. It is Allah subhanahu wa ta'ala's great ihsan, His karam, that He has created us as human beings. Hum insan hai. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Holy Quran, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Human beings are the best creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala crowned us with the crown of humanity and has made us ashraful makhluqat, the best creation of Allah subhanahu wa ta'ala. But it is Allah subhanahu wa ta'ala's greater karam, His greater ihsan, greater ni'mat, that He has made us believers. We believe in the tawheed, oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. But undoubtedly, it is the greatest ihsan, the greatest ni'mat, the greatest bounty, the greatest fadl and blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, that He has made us the ummatis of the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And the Holy Quran says, "Kuntum khayra ummatin."
You are the best ummah. You are the best nation compared to the nations of the previous Anbiya Kiram. You are the best nation, not because of your amal, not because of your salah, not because of your zakat, not because of your fasting in the month of Ramadan, not because of your umrah, not because of your hajj, not because of your gasht. Not because of your gasht. I hope you understand that part. You are not the best creation because you go for gasht. No, you are the best creation because you are the ummati of the Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam. You are the best nation because you are the ummati of the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. May Allah subhanahu wa ta'ala till the day of Qiyamah, throughout our life, may Allah subhanahu wa ta'ala keep this flame of Ishq Mustafa burning in our hearts throughout our lives, in our qabr. And may Allah subhanahu wa ta'ala on the day of Qiyamah bless us with the company, with the sohbat of the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. For verily that is the only means of najat. That is the only means of salvation on the day of Qiyamah, to be in the company of the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. So the Shair says, Halima ko pahunchi खबर आमिना की, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं. Two ashar in the shan of Sarkar Ghaus-e Azam. हमारी है दुआ, हमारी है दुआ, शहे गौसुल वरा, हमारी है दुआ, शहे गौसुल वरा, हरा भरा रहे ये कादरी चमन, हमारी है दुआ, तेरे कदमों में जो मौत आए, वो मौत कितनी हंसी हो, बख्शा जाऊंगा रोज़े क़यामत, इतना मुझको यकीन है, तमन्ना है मेरी, ये चादर आपकी तमन्ना है मेरी, वो चादर आपकी, खुदा करे यही बने मेरा कफ़न, हमारी है दुआ. मैं कादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का, हाथों में मेरे हाथ है पीराने पीर का, हमारी है दुआ, शहे गौसुल वरा, हरा भरा रहे ये कादरी चमन, हमारी है दुआ. छूटे न कभी, छूटे न कभी तेरा दामन, या ख्वाजा मोइनो दीन हसन, छूटे न कभी तेरा दामन, या ख्वाजा मोइनो दीन हसन, या ख्वाजा मोइनो दीन हसन, है तुम पे फिदा, है तुम पे फिदा.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود. Please stand up for Salatu Salam, inshallah. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك जाकनी के वक्त आना कलमाए तैयब पढ़ाना मकर शैतान से बचाना अपने दामन में छुपाना या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रहमतन लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन अल फातिहा. Please make special dua shifa for the beloved mother of our respected Faisal Bhai, Faisal Tiger Force, Farida Khan. May Allah subhanahu wa ta'ala grant shifa kulli sihati kamila wa ajila. All our brothers and sisters that are ill, that are sick, may Allah subhanahu wa ta'ala grant them shifa kulli sihati kamila wa ajila. Al-Fatiha. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معادن الجود والكرم وآل الكرام وابن الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. मौला करीम इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा. मौला करीम इस महफिल पाक में तेरा जिक्र है, तेरे हबीब का जिक्र है, तेरे औलिया का जिक्र है. मौला करीम कुरान पाक की तिलावत हुई. मौला करीम नाज शरीफ पढ़ा गया है. मौला करीम मनक़बतें पढ़ी गई हैं, बयान हुआ है, सलातो सलाम पढ़ा गया है, दुरूद शरीफ पढ़ा गया. इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा. मौला करीम इसमें आमदन या सावन कोई गलती हो गई तो माफ़ फरमा. मौला करीम इस महफिल पाक को हम तमाम लोगों के लिए ज़रिए नजात बना. मौला करीम अव्वलन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस महफिल पाक का सवाब नज़र करते हैं. मौला कबूल फरमा. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले जलीला से जुमला अंबिया इकराम की बारगाह में नज़र करते हैं. मौला कबूल फरमा. मौला करीम इनके वसीले जलीला से जुमला सहाबा इकराम, सहाबियात, खुलफाए राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, जुमला शुहदा इकराम बिलखुसूस शुहदा करबला की बारगाह में नज़र करते हैं. मौला कबूल फरमा. मौला करीम इनके वसीले जलीला से पीरों के पीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला की बारगाह में नज़र करते हैं. मौला कबूल फरमा. इनके वसीले जलीला से आता है रसूल ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रदी अल्लाह ताला की बारगाह में नज़र करते हैं. मौला कबूल फरमा. इनके वसीले जलीले से जुमला औलिया इकराम, बुजुर्गान दीन, जुमला मशाइख इकराम सिलसिले कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सुरवर्दिया, शाज़लिया, रिफ़ाइया, निज़ामिया, साबरिया, जुमला सलासिल के मशाइख इकराम की बारगाह में नज़र करते हैं. मौला कबूल फरमा. मौला करीम इनके वसीले जलिया से जुमला मरहूमीन के अरवाह को जो इस दुनिया फ़ानी से ईमान की हालत में कूच कर गए, मौला करीम उनके अरवाह को इस महफिल पाक का सवाब इसाल करते हैं. मौला कबूल फरमा. मौला करीम बिलखुसूस जो हमारे मेज़बान हैं जनाब फैज़ल भाई, उनकी फ़ैमिली में जो मरहूमीन है इस दुनिया फ़ानी से ईमान की हालत में कुछ कर गए, मौला करीम उनके अरवाह को इस महफिल पाक का सवाब इसाल करते हैं. मौला कबूल फरमा. मौला करीम यहाँ जितने लोग भी हाजिर हैं उनकी फैमिलीज़ में मौला करीम जो मरहूमीन इस दुनिया फ़ानी से ईमान की हालत में कुछ कर गए, मौला करीम उनके अरवाह को इस महफिल पाक का सवाब इसाल करते हैं. मौला कबूल फरमा. मौला करीम मरहूमीन की कब्र की मंजिल को, हश्र की मंजिल को, पुलसरात की मंजिल को आसान फरमा. मौला करीम मरहूमीन के छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा. मौला करीम मरहूमीन के छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा. मौला करीम मरहूमीन के छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा. मौला करीम मरहूमीन को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमा. मौला करीम हमारे भाई बहन जो बीमार हैं मौला करीम उन्हें शिफाए कुल्ली, सेहत कामिला व आजिला अता फरमा. अल्लाहुम्मा शफी मरदाना वरहम मौताना. अल्लाहुम्मा शफी मरदाना वरहम मौताना. अल्लाहुम्मा शफी मरदाना वरहम मौताना. अल्लाहुम्मा अग़फिर लहुम वरहमहुम वअदखिलहुम फिल जन्नह.
اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم حاسبهم حسابا يسيرا اللهم حاسبهم حسابا يسيرا اللهم حاسبهم حسابا يسيرا गौस आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाई ईमा मददे इंतज़ार करम तुस्त मने आइनीरा ए खुदा जुओ खुदा दीनो खुदा दा मददे गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती ज़ईफ़ान शिकस्तरात पुश्ती बहक़ ख़ाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करमी व आलिल किराम व इब्निल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिहक़्क़ि ला इलाहा illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam. Inshallah, the brothers will proceed to the masjid for Salatul Isha, and inshallah, while the ladies, inshallah, will get served. And once we return from the masjid, inshallah, then we'll also partake in the niyaz in the langar. Jazakallah. क्या क्या नहीं मिलेगा मदीने में दोस्तों, क्या क्या नहीं मिलेगा मदीने में दोस्तों, क्या क्या नहीं मिलेगा मदीने में दोस्तों। रहमत का दर खुलेगा, रहमत का दर खुलेगा मदीने में दोस्तों, क्या क्या नहीं मिलेगा मदीने में दोस्तों, क्या क्या नहीं मिलेगा मदीने में दोस्तों। इश्क़े नबी हो दिल में, मदीने की हो ज़मीं, फिर जिंदगी खुदा की कसम है बड़ी हंसी, हर मुद्दा मिलेगा, हर मुद्दा मिलेगा मदीने में दोस्तों, क्या क्या नहीं मिलेगा मदीने में दोस्तों, क्या क्या नहीं मिलेगा मदीने में दोस्तों। वो खुश नसीब है बड़ा खुशबख्त दोस्तों, जिंदा है वो अरे उसे मुर्दा नहीं कहो, आशिक वो जो मरेगा, आशिक वो जो मरेगा मदीने में दोस्तों, क्या क्या नहीं मिलेगा मदीने में दोस्तों, क्या क्या नहीं मिलेगा मदीने में दोस्तों। जाए भिखारियों की तरह जो